Let's start question number 7. Cube root of 0.216. First decimal number convert into the fractional number. If we delete the decimal, we take 1000 in denominator form, क्योंकि after the decimal 3 digit 1 2 3 1 2 3. Now same it is, we write here 216 upon 1000. फाइंड द फैक्टर ऑफ, देखिए जब हम 1000 का लेते हैं तो हम इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 ले सकते हैं बिना फाइंड करे भी, लेकिन 216 का आपको फाइंड करना पड़ेगा. 216 2 1 ज़ा 2 2 0 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. We write here the factors 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 10 into 10 into 10. Now we write cube root of 216 upon 1000 is equal to 2 into 3 upon 10. 2 3s are 6 upon 10. Now if we divide 6 by 10 we get 0.6 before the one digit because it has 1 0 here, to 0.6. So we write cube root of 0.216 is equal to 0.6, its answer. Clear? Now same 4.096, आपने इसका डेसिमल हटाया, नीचे कितना ले लिया 1 2 3,000. सो फर्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ 4096. 2 2 ज़ा 4 0 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 0 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा. तो देखिए कितना आ गया आपके पास, 4 ट्रिपलेट फॉर्म आ गया इसमें. तो वी राइट हेयर 4096 अपॉन 1000 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, टू 9 टाइम्स. ट्रिपलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म नहीं बच्चों, और भी है 2 इंटू 2 इंटू 2 12 टाइम्स अपॉन 10 into 10 into 10. If we find its cube root, we take one time from one triplet. 2, again we take 2, again we take 2, again we take 2, and 10 3 times we take one time. The cube root of 4096 upon 1000 is equal to 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 upon 10. If we divide 16 by 10 1 0, so we get decimal before the one digit, 1.6 its answer. Clear? Now third part of this question, 0.003375. So first delete the decimal. We take 1 2 3 4 5 6 6 0 here. Now find 3375 upon 10 lakh. So we write, find the factor of 3375.
3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Again 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 5s are 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. So we write here 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Now 6 times we write 10 into 10, 6 times 6 times 10. जितनी ज़ीरो होती हैं बच्चों उतना ही टाइम्स 10 लिखते हैं. 1 2 3 4 5 6 ये नहीं लिखेंगे. तो नाउ फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10, 2 ट्रिपलेट फॉर्म बिकॉज. तो कितना आ गया 15 अपॉन 100. क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन, ठीक है. तो इसमें अब आपको क्या करना है, राइट इन डेसिमल. पीछे भी क्वेश्चंस में मैंने डेसिमल में नहीं लगाया है, अभी बता देती हूँ उसको. तो यहाँ पर लिखेंगे 0.0033375 इज इक्वल टू डेसिमल बिफोर द 2 डिजिट 0.15. वी टेक 0 फर्स्ट, सो इट्स आंसर इज 0.15. क्वेश्चन में इसमें भी ये कर सकते हैं आप, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन लिख दीजिएगा क्यूब रूट ऑफ 4.096 इज इक्वल टू 1.6. एंड इन द फर्स्ट पार्ट तो आपने लिखा ही है 0.216 इज इक्वल टू 0.6. क्लियर. नाउ इट इज सेकेंड पार्ट. It is third part. Question number 8. So show that cube root of 27 into cube root of 125 is equal to cube root of 27 into 125. First we take LHS. LHS this side. LHS means first cube root of 27 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5. नाउ सिमिलरली RHS वी टेक 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 5 are 25, 25 5 are 125. We can write it. It is RHS, it is LHS. Now find the cube root of 27, 3, and cube root of 125 is equal to 5. So 3 multiplied by 5 we get 15. Similarly we write triplet form में है 3 और 5, तो we take 1 time 3 1 time 5, it is 15. So LHS is R equal to RHS, means cube root of 27 into cube root of 125 is equal to 15, and in RHS cube root of 27 into 125 is equal to 15. Hence verified. Clear? First part of the question number 9. Find the value of cube root of 392 multiplied by cube root of 448. First we find its factor. It is divisible by 2. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18. Now 7 7s are 49,
7 ones are 7. Now find the factor of 448. 2 twos are 4, 2 twos are 4, 2 fours are 8, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 twos are 4, 2 eights are 16, 2 14s are 28, 2 sevens are 14, 7 ones are 7. तो बच्चों आप क्या लिखेंगे इसको? 392 इंटू 448 फैक्टर्स कंबाइंडली लिख देंगे इसके, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये 7 ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं आ रहा है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 448. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. तो नाउ वी टेक द, देखिए ये भी हमारा ट्रिपलेट फॉर्म में है. इट इज़ इन द ट्रिपलेट फॉर्म एंड इट इज़ ऑल्सो इन अ ट्रिपलेट फॉर्म. नाउ it is also 7 is also in a triplet form, तो we can write it क्यूब रूट ऑफ. अगर आप इसको एक साथ भी मल्टीप्लाई करके कर देते हैं तो ये ठीक माना जाता है, जैसे कि अभी हमने शो किया था क्वेश्चन नंबर 8 में 448. तो वी राइट हेयर 392 इंटू 448, 2 इंटू 2 इंटू 1 टाइम 2 अगेन 1 टाइम 7. 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 sevens are 56. So cube root of 392 into cube root of 448 is equal to 56. Its answer. Now its second part, question number 9 in homework. Okay. Now start the question number 10. Find the smallest number by which 17,496 must be divided so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. First we find its prime factors. 17,496 if we divide by 2, 2 8s are, 2 7s are, 2 4s are, 2 8s are. Again 2 4s are, 2 3s are, 2 7s are, 2 4s are. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14. Now it is divisible by 3, 3 7s are, 3 2s are, 3 9s are. Again 3 2s are, 3 4s are, 3 3s are, 3 8s are, 3 1s are, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Check the triplet. So we write here factor of 17,496 is equal to 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. How many times? 2 3 3. 3 into 3 into 3 into 3. It is the factor of 2 is in a triplet form, 3 is in a triplet form, and this 3 is also in a triplet form. It is single number 3. So last 3 is not in a triplet form. Therefore 17,496 must be divided by 3, then we get a perfect cube. अगर ये 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा. तो नाउ डिवाइड 17,496 बाई 3. इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा?
If we divide 17,496 by 3, we get 3 5s are 15, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 2s are 6. Now in question, find the cube root of the quotient. Also find the cube root of the quotient, यानी कि जो हमारा quotient आ रहा है इसका फिर से आपको cube root find करना है. Now again find its factor. 2 2s are 2 9s are 2 1s are 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now factor of 5832 is equal to 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3. See that now it is a perfect cube number, क्योंकि इसके सभी जो हमारे फैक्टर हैं वो किस में आ गए बच्चों, ट्रिपलेट फॉर्म में. तो वी राइट हेयर क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18. So cube root of 5832 is equal to 18. Now chapter number 4 is finished. Everyone do all the work and homework in your notebook, okay?